Please welcome Billy X. Thank you so much, Dino. What's up, bro? Good to see you again. Good to see you, my friend. हाँ. क्या फीलिंग है Billy X की इस वक्त? जो कि पिछले 2 साल से जो मैं अपने एक ये नया आर्टिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, I finally found him and I think good things. So hold your favorite entertainers accountable. You like as an entertainer or a singer or a rapper. आप उसको उसी तरह अकाउंटेबल, अगर वो पुरानी चीज़ कर रहा है तो उनको आप पॉइंट आउट करें कि प्लीज़ ना करें. Billy X 1.0 था and he had that sound at that time. But this new Billy X is more experienced. इसने ज़िंदगी देखी है, इसने टर्मोइल्स देखी हैं. Travel the world. He's traveled the world. Assalamu alaikum everybody and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene with me Dino live on FM 91. We are here right now on YouTube, so remember subscribe करें. अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं तो रेडियो सुनते रहें because we'll keep bringing you these amazing interviews just for you. And today we have a really cool interview because the artist we have on the show has been around in the game for a long time. He is one of the OG MCs that we have in the scene. You know, he was at the top of his game, then he went away, then he came back, and he's now again bringing hits after hits, getting people ready for all of his next round of music. A really, really unique, fun, humorous, and hard-hitting rapper always. And I'm really excited that he's on the show. Please welcome Billy X. Thank you so much, Dino. What's up, bro? Good to see you again. Good to see you, my friend. यार बड़ा मजा आता है बिली जब आप शो पे आते हैं. तकरीबन 1 साल हो गया है. I know. Last time we were sitting here. हाँ, it was the same time of the year. Last year we spoke when you had just come back in the scene properly. Yes. And you are in the scene now, bro. Like you are like गाने back to back. मतलब concerts भी हो रहे हैं, collaborations भी हो रही हैं, social media भी on हो गया है. Billy X is back, baby. If you remember, मैं last year, for some reason, when 2025 came around, मैं तुम लोग यही कह रहा था कि for some reason I feel very optimistic about this particular year, and I feel like good things will happen. And I feel like I finally, जो कि पिछले 2 साल से जो मैं अपने एक ये नया आर्टिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, I finally found him, and I think good things. So you are seeing the fruit of that. Labor finally happening this season. So the new artist, the new Billy X. Yes. How would you describe the new Billy X to people? Like this new, reinvigorated, new like एक जो आया jolt. क्या feeling है Billy X की इस वक्त? What I want people to take away from it is hold your favorite entertainers accountable. और मैं अपने आप को उसी यानी किसी पेडस्टल पे नहीं रखता, मैं अपने आप को उसी तरह तोलता हूँ कि हाँ जी, what I am doing, does that reflect is there growth or if I am still doing what I was doing back in 2008. So मैं अपने आप को इस तरह, and whoever you like as an entertainer or a singer or a rapper, आप उसको उसी तरह accountable, अगर वो पुरानी चीज़ कर रहा है तो उनको आप point out करें कि please ना करें. So this is what I expect of myself and what I want people to expect of me. This person will continue to work on his new sound, experiment, because there's why be afraid when things are obviously changing around you? So why should one remain the same? That's true. So that is what हाँ ठीक है, वो जो पहला हमारा एक Billy X 1.0 था and he had that sound at that time. Completely respected. I know people want me to sing similar songs, but this new Billy X is more experienced. इसने ज़िंदगी देखी है, इसने टर्मोइल्स देखी हैं. Travel the world. He's learned responsibility and he's traveled the world. So now I feel like there's more potency in my writing than it used to be when I was a 22-year-old kid. Okay, so let's talk about Billy X from back in the day. Like, you came back in 2023. Yes. Back to Pakistan? Yes. And this is 9 years after you left. A 9-year hiatus. Like almost a decade. यार 10 साल मतलब कि 9 साल बाद एक बंदा वापस आया है. पहले तो let's talk about like, so I want to talk about like you leaving, because how old were you when you left? You were like in your... I was 26 when I was You were 26. So you became a star at 22. 22, हाँ, around 22, 23, you became a star. Like मतलब गाना super hit हो गया है. ऐसे याद है the first time I came to Karachi was on my show. And the first time you came on my show. Came on your show, we met outside these walls as well. Yeah. And it was such a great week. और उस time पे
यानी मेरे पास वो फ़ोन नहीं था जिसमें इंटरनेट होता था. होल वीक आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट और उस वक्त सिर्फ फेसबुक ही था. Yeah. एंड ओनली वन अ वीक लेटर आई वेंट बैक टू लाहौर. जब मैंने फेसबुक खोल के देखा तो दुनिया बदल गई थी बिकॉज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रमोशन. Yeah. So that was fun back in the day. Yeah, so 22, 23-year-old who becomes a star, like that one song became a worldwide smash. Even right now on Spotify, it's a massive streaming, Goliath for you, ऐसा ही है. It's become the people's song. It's because it's an iconic song. Like मतलब कि it's an iconic. There was never a song like that, And then you did it for a couple of years, and then लोग usually इस peak का सारी जिंदगी इंतजार करते हैं, but you just left. You left, bro. I did. Like, okay, so you left. Now, a lot of people. Okay, were there any? Okay, I obviously know the reason you left, but लोगों को मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या controversies फैल गई थी या लोगों ने rumors फैलाए थे कि क्यों गया है? For sure, since I've. What was the rumors? यानी the worst one के बिली मर गया. हमें तो ऐसा लगा कि है क्या? बिली मर गया है? अस्तगफुरुल्लाह, नहीं यार. Passed away like. नहीं यार, मार दिया उन्होंने. इस हद तक. So that's such a bad thing to do. Like, artist that was the worst one. So मर गया. then you can imagine everything in. Oh my god. That's horrible, सब bro. कुछ सुनने को मिला, but it was fine. Like, why did you मेरी leave? disappearance ही इतनी. Why did Billy X leave after becoming a star? Why did you leave? Person to person depend करता है. Like, for me, experiencing life was probably more important than the fame thing that I had in Pakistan, and I respect it. Not everyone gets to enjoy what we do. Yeah, it's a privilege. It's a privilege. It's a very rare thing. मगर at that time whoever that guy was, उसको थोड़ी दुनिया देखनी थी, थोड़ी ज़िंदगी मुख्तलिफ सिर्फ पाकिस्तान की वॉल्स के अंदर से निकल के एक्सपीरियंस करनी थी. It was very important to him for quite a few years even before he became the Billy X thing. तो जब उसको finally वो opportunity मिली कि he could go out abroad, study, so I took it and I never really looked back. Okay, I was regretting, oh shit, हाँ जी अब मैं आम इंसान बन गया हूँ यहाँ पे. पहले मैं बहुत famous था और मुझे जितनी So you left because you wanted to live life abroad and experience life. experience life. There was no like, oh my god, fame का pressure है और कोई mental breakdown आ रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है. Nothing. It was just you woke one day and be मैं like. 2010 से MBA के लिए apply कर रहा था and for some reason things would not work out. Either Right. my dad didn't have the money. Right. या it wasn't the right time. या मैं fail हो जाता था एक entry test में किसी यूनिवर्सिटी. मैंने Canada try किया, मैंने UK try किया. I think there was Ireland as well. Okay, so you And while then I you finally were worked out for Australia. so while your songs were becoming hits and while you were performing, you were applying to universities. Yes, मैं even 2012 में सब छोड़ के मैं GRE के टेस्ट की तैयारी 4 महीने अकेडमी जाता था while I was famous. नहीं यार. So you didn't take fame seriously, essentially. I mean, I did because I loved music and I had that passion for But it. it wasn't like, oh, मैं star बनना चाहता हूँ. Like, it wasn't that? नहीं, for some, यानी हमारे पेरेंट्स ने हमें ह्यूमिलिटी इतनी इनबिल्ट की हुई है कि I've never really जो है ना अपने आप को उसने मुझे कभी ईगो बूस्ट नहीं दिया. द फेम थिंग I still am like, I appreciate people जिससे आप लेवल होके बात कर सको और कोई because of what they do in life doesn't give them the right कि हाँ जी वो किसी ऊपर भी टावरिंग इस तरह करके खड़े हो सकें. I like just having that normal conversation. तो I just needed to be in that environment where everyone is equal as well. Right. Like यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखते हो ना कि हाँ जिसके पास थोड़ा सा Oh, अफसरी आई उसने वीगो और डाला रखा और जो है ना 4 लोगों का वो अफसर बना हुआ है. बस. I hate being called sir या boss Yeah. or anything of the like, sort. yeah. और यहाँ पे जब मैं ऑफिस में भी काम करता था तो वो चीज़ अब वहाँ पे हम I used to work for 7 years in HR. हमने अपने बॉस को कभी बॉस नहीं बोला, हम नाम से बुलाते थे. And that was what I liked about that country. Like everyone was equal. Doesn't matter how much you earn. So मुझे एक बात बताएं, like when you went abroad, did it ever hit you that you're just normal now? There's nobody who knows what a star you are back home. For sure. शुरू में
जाते साथ ही बल्कि आपको तो पता चल जाता है 4-5 महीने मेरे पास पैसे थे तो मैं ना तो मुझे तब पता नहीं चला, तब नहीं समझ आई, मैंने खुल के उड़ाया। And as soon I as love that. I love how honest you are. कि like यार पहले बहुत पैसे थे पहले कुछ दिनों में ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं स्टार नहीं समझ हूँ। नहीं आई, ठीक है, I was just consumed by that student life once again, मगर now in this international environment जहाँ पे और यूरोप से लोग आए हुए हैं और अफ्रीका से लोग आए हुए हैं और अमेरिका से लोग, ऑस्ट्रेलियन तो थे ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ ये बाहर के सारे थे, और उनके बीच में एक मैं था, बाबर, नॉट इवन बिली, इट वाज बाबर, हाँ, जिसको वो बबार या अजीब अजीब किस्म की उसकी, तो आई वाज जस्ट कंज्यूम्ड एंड गोइंग आउट पार्टीइंग एंड दिस एंड दैट, एंड जस्ट कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। जैसे ही पैसे खत्म हुए ना, अब नौकरी ढूंढने की बारी आई, मैं तो स्टार पता चला कि अच्छा नहीं, स्टारडम तो पहले दिन से चला गया था, बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट मंथ जैसे ही मैं लैंड हुआ, मुझे एक दोस्त था ऑलरेडी सिडनी के अंदर रहता था, तो उसने कहा मेरे साथ ही अपार्टमेंट में आ जाना, मगर उस वक्त उस 2 कमरे के अपार्टमेंट में 4 लोग ऑलरेडी रह रहे थे। तो फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स आई वाज आउट ऑन अ सिंगल मैट्रेस इन द लाउंज, और मेरे मैट्रेस के साथ मेरा सूटकेस पड़ा होता था, एंड आई वाज लिविंग ऑफ दैट। तो वो तो एकदम से ही खत्म हो गया था सारा स्टारडम। खाना वाना आप खुद बनाओ, जो भी करना है करो, कपड़े धोने। When the money ran out. But when the money ran out is when was dire straits, like हाँ, फिर $1 का टूना का कैन जो है ना, या बीन्स का कैन, और सारा हफ्ता ब्रेड के ऊपर गुजारा करना। So that actually, and I loved it, कि that taught me so much about the respect for money. It hardens you. यहाँ पे if you are blessed to have belong from a decent family, decent earning family, जो कि मेरे थे, तो हम पे कभी प्रेशर ही नहीं आया उस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी का। So Australia really taught me कि हाँ जी, how do you make something of yourself when you have nothing, when you wipe out your dad's assets, his money, his house, all the bills being paid, now when you have to do it yourself, वो चीज़ मुझे वहाँ जाके सीखने को मिली, in an environment where I enjoyed it as well. तो मेरे लिए वो it was an easy decision to make. Yeah, all right. So now 9 years गुजर गए, seen the world, traveled the world, done all you could, being Babar. Now अंदर से बिली एक्स कह रहा है, मतलब क्या सीन है ये, you know what I mean? बिली एक्स एक दिन यूं सो के उठा, उसने 9 साल गुजर गए, you know, and now अंदर से आवाज आ रही है। I don't know, this is what I'm thinking. This is what I'm thinking. So when was that moment where Billy X woke up and said, yo, it's time to go home? Billy X woke up 5 years later. So 9 साल में वहाँ पे था, मगर 5 साल जब गुजरे ना, उस 5 साल में मैं रैप बिल्कुल भी नहीं करता। The musician, the passion for music was still there. I went and bought a guitar for myself, और मैं sugar acoustic गाने अपने लिए लिखता रहता था। I still wanted to do Ed Sheeran covers और the script covers, और मैं कभी भी ऑफिस में बजा लेता था, या अपनी यूनिवर्सिटी। But you were having fun. You didn't take it like मतलब there was no I want to make something. 2019 में वो रैपर बिली एक्स जो है ना, वो कहीं से खड़का फिर से। Okay. तो पता फॉर सम रीज़न कहीं से वो सोच आई, एंड आई थॉट कि हाँ जी, लेट मी स्टार्ट राइटिंग अगेन। तो फिर मेरी एक घंटे की ट्रेन होती थी काम की जाने की, और घंटे की ट्रेन आने की होती थी। तो मैंने एक डायरी रखी होती थी, 20-25 मिनट उस घंटे के अंदर ना मैं अपनी स्क्रिबलिंग, बिकॉज दैट्स हाउ इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड रैप, तो तब भी इसी तरह सीखा था कि बस जस्ट स्क्रिबल, डोंट राइट सॉन्ग्स, जस्ट स्क्रिबल, राइम्स। जब तक वो कचरा आपके अंदर से निकल नहीं जाता, देन द गुड स्टफ विल स्टार्ट कमिंग अप। तो वो कचरा निकाल के महीने समथिंग जो है ना, जितने भी, लाइक अगेन मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि डोंट पुश इट, डोंट बी लाइक कि हाँ जी हमें कल ही हम गाना हिट चाहिए, या कल ही हम जो है ना एकदम इसके लेवल का गाना बना दें। जस्ट लेट दैट नेचुरल प्रोसेस वर्क फॉर यू। तो जब भी वो नेचुरल प्रोसेस आया, देन आई रोट द सॉन्ग बिली एच वी बला, विच गॉट अ डिसेंट mileage on YouTube and other platforms. फिर when the boom came here after Gully Boy, और फिर हमारे फारिस और यंगस्टर्स और ये सारे जो है ना, their music started pushing through into Sydney, जिसमें पिछले 6-7 साल में पाकिस्तानी म्यूज़िक बिल्कुल भी मुझे सुनने को नहीं मिला था। I was just completely, मगर जब ये ब्रेक थ्रू हुआ तो ये सारा म्यूज़िक वहाँ तक पहुँचना शुरू हो गया, and I was like, all right, अब रैप का सीन फाइनली आ गया, जो मैं तब कोशिश कर रहा था। वी डिड ब्रेक वन मोमेंटम, या एक
हमने जो रॉक का सीन खत्म किया था, आई फील बैड फॉर इट एज वेल, Yeah. because I really loved that music, I and know. In those days, those yeah. were our Yeah. idols to look up to, Rosen or Right. Gaul, And then or now rap has come back now in 2019. 29. तो 2020 में फिर मुझे भी कीड़ा होना शुरू हो गया कि बिकॉज म्यूजिक हैज चेंज सो मच, और अंदर तो वो हमेशा से आर्टिस्ट था ही, तो आई स्टार्टेड राइटिंग अ फ्यू songs, but they were in a very different feel Right. from what I used to do, and I didn't even realize But it. that's Now because I guess because you became older, right? That's did, probably I mean, you're not the same guy. even the way that I rapped or the tone that I used, those Everything became changed. mellow. Everything sort of changed. Wow. But एक सवाल है मेरा. I want to ask you this question. I think it's a very fair question. कि जब अब आपने एक चीज़ 5 साल से नहीं की, आप कुछ भी चीज़ 5 साल या 6 साल नहीं करते तो बंदा भूल भी जाता है, मुश्किल भी हो जाता है दोबारा करना. You stumble trying to do it again, and then you put your pressure on yourself कि यार मैं यार क्या कमाल का, अब मुझे क्या हो गया है, you know what I mean? Because you think you're not as good as you used to be, you start doubting yourself, or maybe some people just do it like it never left them. What category were you in? जब आपने लिखना शुरू किया दोबारा, अब 5 साल से रैप नहीं लिखा, अब रैप लिखना शुरू हुआ है, तो was it hard? Was it easy? Did you stumble? Like, how did you feel after you picked up the pen after 5 years? All of those doubts will creep into your mind when you haven't done something for 5 years. तो ये सारा वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो अंदर से doubts, गर्दो गुबार निकालना एक तो of whatever shit rhymes that you want to write, और फिर ये doubts निकालना, हज़ारों दफ़ा ये doubts आए कि maybe I'm not good enough, maybe these guys are now better than I am, maybe I'm just too old. All of those creep into you. But वही तो process है, उसी से तो आप, you go to the gym, the first day you will be nothing, but if you keep going consistently, hopefully after a month you'll start feeling more confident about कि now I know what I'm doing. हाँ जी, biceps लगाने हैं तो कौन सा, तो it's the same, like you exercise your vocals, you exercise your lyrical ability, you exercise your production ability, whatever that you are doing. तो डाउट्स तो अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं. हाँ, डाउट्स तो like as you've been doing it if I'm not writing for a while, for example right now is the time I haven't written anything of significance in a bit, because क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये इतना कंटेंट क्रिएशन आपका इतना टाइम ले लेता है, and if you're like, I'm not a creative control freak, but I haven't really found that partner कि जो वो creative freedom मेरे से ले ले, and I can just trust that person कि हाँ जो ये निकालेगा वो मुझे पसंद आएगा. I haven't found that person yet. तो वो क्रिएटिव डायरेक्शन मुझे अपने कंटेंट की वो भी मेरी होती है, सही है ख़राब है आई डोंट नो, बट एटलीस्ट इट रेजोनेट्स विद मी. तो कभी एडिटर को जो है ना आप वो दे रहे होते हो, फिर म्यूजिक वीडियोस करनी है, उसकी स्टोरी बोर्डिंग के अंदर भी जो है ना आप बैठे होते हो. So you haven't found that lane yet, so it's becoming. I'm trying to build that team. क्योंकि अब टीम के बगैर गुजारा नहीं है. पहले it was easier to do it everything yourself. Yeah, I agree with you completely. अब टीम के बगैर you need your content person, you need your producer, you need your management to. मैं जो भी देख रहा हूँ ना, like, and it's sad. But जितना मैं म्यूजिक के अंदर घुस रहा हूँ, I feel like everything is paid for. Like this. What does that mean? What do you mean everything is paid for? It's just like these trends, and there's hardly actual virality जो है ना. Authenticity. Authentic viral moments कम है. Or I know which ones those are. Now that I've been diving deep into. Do you think artists are becoming more fake? Is that what you're trying to say? I am saying that the system is rigged. Really? कि ये एल्गोरिदम से ही जो है ना, अब आर्टिस्ट अपनी गाने बनाने की एबिलिटी पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने इसको फिगर आउट करना है कि इसका एल्गोरिदम क्या कहेगा, इसको मैं क्या बना के दूं कि हाँ ये मुझे पुट्स माई म्यूजिक आउट देयर. तो हम उन चीज़ों के बारे में सोच के जो है ना, दैट माई म्यूजिक इज बीइंग अफेक्टेड. लाइक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे कैन टेक केयर ऑफ दैट, देन आई कैन वर्क ऑन माई creativity, and that is just writing songs, right, recording songs. Right. So you feel like that these other elements are taking away time from your art, essentially. Exactly. Right. So you'd rather focus on the art itself. I would want to, मगर the system is now created. ऐसा है आपको करना ही है. आप नहीं करोगे तो
doesn't matter how great a song that you have, इक्का दुक्का गाना होता है जिसमें एक्चुअल वायरल एलिमेंट होता है, जो हमने देखे हैं पल पल एंड कल सुन. बट except for those two songs, can you name another viral song which Not really, no. in the last year? No, not Just in the really, last no. year. That's true. So to keep yourself afloat and get your voice out there, you have to do all of this These are the other song and dance. Now let's talk about something which you told me off air. We're going to discuss it. He's working on a new EP. Now tell us about the EP, dude. Like, Yeah. I mean, you've obviously been taking out singles. अब गाना बाहर आ रहा है, लेकिन अब EP आ रही है बाहर. EP का क्या सीन है और क्या what can we expect from Billy X? EP का सीन ये कि एक there was an album that I did back in the day, and this is the first time after 2014 that I've worked on a project जिसके पीछे एक combined theme है, and it's sort of पहले दिन से ये नहीं था, just like एक गाना लिखा फिर उसके बाद अच्छा इससे connecting कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, and then that things started formulating कि I could at least do a 5 or a 6 song EP which has the same theme or content or things that I'm talking about. And what I was really focusing on this particular EP is कि हाँ ठीक है, हम अपने गाने फेंक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको माइलेज मिले और they are highly entertaining and all that, but I want at this point in my life, I don't know if it's the age factor or something, कि my music also means something to the kid who wants to do whatever he wants to do in his life. Like it just has that meaning to give छोटी सी उसको एक spark of inspiration जो है ना उससे मिल सके. And that's what I want that music to do as well. Besides the entertaining part कि हाँ जी जो आपको जटनी का comment मिलता है कि हाँ this was our childhood song और हमने बहुत मज़े किए और हमने road trip पे गए और हमने ये गाना सुना. But I want कि हाँ जी थोड़ा सा positive impact भी होना चाहिए. तो there's 5 songs. और इसके अंदर भी मैं एक तीसरा जो बीच वाला गाना है वो एंटरटेनर है. That's not your motivational song. Yeah, but the other ones that's like are pure entertainment. Yeah. So starting from Straight to Mars, again this whole motivation that we can do better with our lives and our aim is as high as Mars is. So from that we go to Born to Fly. और ये दोनों गाना आ चुके हैं, you can listen to it. Born to Fly, another theme that I wanted to really weave into this EP was representing my city, which is Lahore, representing my state, which is Punjab, and really taking ownership of that. तो पूरा पंजाब साढ़े मोड़ियां ते लाहौर वसिया है रगां विच, उड़दा पंजाब मेरे खाबां विच, we were born to fly. Yeah. तो Nice. telling your own story, and I would just want दरवेश के साथ मोस्टली सारे गाने हैं, तो मैं उसको भी जब लिख रहे थे तो मैं उसे कह रहा था कि try not to write anything जो हम रैपर्स को हमें आदत होती है कि हम वी बोस्ट अबाउट थिंग्स दैट वी डोंट हैव, या मैं ही हूँ, ये ओजी का तो वैसी डेफिनेशन ही जो है ना चेंज हो चुकी है. तो आई वाज लाइक टॉक अबाउट रियल थिंग्स, लाइक थिंग्स दैट बॉदर यू, थिंग्स दैट डोंट वर्क आउट फॉर यू, एंड दैट्स द स्टोरी दैट आई वांट पीपल टू लिसन फॉर फ्रॉम अस एट लीस्ट दिस टाइम राउंड. और फिर वो बाकी बकवास तो हम करते ही रहेंगे, हमेशा कहेंगे हाँ मैं रैप द पे और मैं आज भी बुलाते सब कुछ, वो चलता रहेगा. Like this is more about, it's more reality based. This is like, Yes. this is real feelings. Yeah. तो Born to Fly, फिर बीच में ब्रेक आई नोरा 94 की, अगेन डूइंग दैट सेम लड़की वाले थीम के साथ, शुगल, हाँ. शुगल बकवास, whatever boys do. And then the fourth song that's now coming out, उसका म्यूजिक वीडियो हमने शूट कर लिया है, रमजान से पहले वो गाना आएगा. That's called हुड द खास. Okay. And that one is actually, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है. That's like my Lose Yourself. Really? Wow. उस कैटेगरी का, like it could really put a dent. Like hope I hope कि जितना हमें वो अच्छा लगता है, Zarar loves that song. Wow. And he was like, I will back you up, don't make a shit video. खैर वो अलग बात है. Zarar is his brother, by the way. If you don't know this, Zarar Khan is And- Billy X's brother. So shout out to Zarar. So And congratulations to Zarar, of course. congratulations to Zarar. हाँ हमारी नई भाभी आ चुकी है. हाँ, खैर exactly. more on that later. तो हुड द खास is like our Lose Yourself. और Lose Yourself अगर किसी को नहीं पता तो it's the Oscar winning Eminem song Yeah. from 8 Mile from back in the day. Yeah. So maybe the new rappers has actually बड़े लोगों ने अभी तक 8 Mile नहीं देखी हुई. I love So it. that man. used to be my. If you're a hip hop artist or wanna be a hip hop artist and you don't know what 8 Mile is, just don't do this job. Do something else. कुछ और कर लें. So that is that. But then
जब हुड्दा खास लिख लिया था ना, फोर्थ सॉन्ग वाज डन, सो देयर वाज अ मीटिंग जिसके अंदर दानिश और ज़रार और मैं और बैठे हुए थे. तो दे वर लाइक, अभी भी वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि इस गाने का नाम होना क्या चाहिए. तो दे केम अप विद कि इस गाने का नाम रख देते हैं कि हाँ ये आखिरी गाना है EP का. तो हाँ जी, वहाँ से बात चली स्ट्रेट टू मार्स, बॉर्न टू फ्लाई, और यहाँ पे फाइनली फेमस कि दीज गाइज आर फाइनली फेमस. तो दे वांटेड टू कॉल दैट, मगर आई sat with the concept of finally famous. It's like, it's makes sense, but the title not for that song. So then I went and wrote a fifth song for the EP, and that song is the title song of the EP called Finally Famous. मगर क्योंकि हमने हुड्दा खास लिख लिया, which is like lose yourself का potential या उसकी hype देने वाला, तो I was like the fifth song needs to be even more like bigger and grand and climatic कि हाँ जी ये आपकी finally अब 5 गाने इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं. तो hopefully Finally Famous, which would come around Eid, would be मेरे लिए वो lose yourself से भी ऊपर, तो उसकी recording वाली भी मेरे लिए इतनी important. I hope I'm able to justify it how I see it in my mind, or how I hear it in my mind. So हुड्दा खास से हम जाएंगे Finally Famous पे, and again like just talking about real things and trying to inspire people or motivate people through हमारी struggles, हमारी journey. That's amazing, dude. I'm really looking forward to the EP. What is the EP called? It's called, the EP is called Finally Famous. Finally Famous. Go and check it out. It'll be out right after Eid. So I've been releasing it as singles. Yeah. और ये मैंने जोखे से इंस्पायर हो गए, because जोखे की एक EP आई थी कुछ टाइम पहले, about a couple of years ago, maybe even earlier than that, and he released it as singles. Right. And I like that strategy क्योंकि फिर मैं focus कर सकता हूँ to market each and every song, or give it at the like, proper respect of putting it out there. Yeah, I think that's a good approach. That is a good approach. Now let's talk about finding a new sound, because lyricism, to obviously that is something that's in your bag, because you know you're a hip hop artist. Lyrics is your game. But then finding a musical genre or a bunch of musical genres that define this new wave of Billy X songs is very important as well. I mean, ज़ाहिर है hip hop के अंदर भी इतने सारे options आ गए हैं. You got trap, you got so much drill, you got so much like Jersey Club to Fulana this, Fulana that. You know, there's so many options, and a lot of people stick to one option. Like there, you have people who only do hard rap. Yeah. Some people only do 90s inspired rap. Some people only do slow beats and like trap beats and that kind of vibe. Now Billy X jab aaya market mein, to Billy X was known for having a very like a very hype, fun kind of fun, hyped, aggressive, but like like more upbeat. More upbeat for sure. Now we have an older Billy X. Now we have a mature Billy X. जब बिली वापस आया मार्केट में और उसने जब साउंड की बात की, तो what kind of sound are we looking at in terms of the releases, and what arena are you playing in, or like are you boxing yourself, or are you just going for everything? So never going to box myself, like that's just not me. And चाहे जितना भी लोग कहें कि हाँ जी यार नहीं चटनी वाला साउंड ही करो और हमें वही पसंद है, but if I do that I'll just kill the passion for music that I have. तो शुरू में तो it was just trying to find myself, और बड़े साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया. I did this Mexican style beat called Crazy Baby Lazy Baby, and then I did a trap like beat, and I really believed in that song called Elias. So I still think it's a great song, but go and check it out. Then I did 2 drill songs, एक देसी drill और एक proper UK drill, and those were put out just this last year. So उनकी music videos भी हैं. And from all of this experimentation, I've kind of figured out कि हाँ, like what people expect of me, और what कहाँ पे उसका harmony कहाँ पे होगी, कि हाँ जी वो क्या चाहते हैं और मैं उनको क्या provide कर सकता हूँ, दे सकता हूँ to entertain them. And I kind of feel that I've found that voice or that sound, but it would still keep changing. For example, this EP is more hardcore and just very manly and those thick tones as far as vocals are concerned. But then I have this song recorded, and it's been a while that I wrote that song. Uska naam hai Coffee Date, and that's just so different from anything that I've heard from anybody. Coffee Date. Okay. All right. So, but
I love that song. So There you go. Yeah, as long as you love. I feel like artists need to love their songs as well. Exactly, Like, you know huh. what I mean? Like, a lot of artists make songs and they just make songs. It's like, you have to love your song, bro. You know, you don't have to like. I was my most top 10 listeners on Apple Music. जरूरी है क्यूट I was like, देखो जरा। क्यूट यार देखो यार। अपना सबसे बड़ा fan. हाँ, जो बात है But it's fine. ये Like, जरूरी you है have to believe in yourself. ये Because जरूरी है कितने लोग आपको कहेंगे कि ये कर लो ऐसी और की वो तैसी कर लो, आप अपने फैन बने एक साउंड पे स्टिक करो. जो देखो, बंदा अपना फैन नहीं है ना वो किसी का फैन नहीं है देखो मैं- तलविंदर क्या कर रहा है, उसका वही साउंड है. आपको शुरू क्या से. लग रहा है तलविंदर अपना फैन नहीं है हाँ। मतलब वो अपना मुंह इस तरह बनाया हुआ है उसने ऐसा ही है. मतलब वो क्यों बनाया हुआ है क्योंकि उसको एक्चुअली लगता होगा कि वो अच्छा लग रहा है राइट सो लाइक बिकॉज़ ही इज हिज ओन फैन He is his own fan. ब्रो यू हैव टू बी ओन योर फैन मैन दैट्स द होल पॉइंट So that's the fun part of the job कि जब आप finally एक project को record Shout out to करते हो. Talvinder, by the way. He always shows a lot of love to our people. I have Yes, to say, for there are sure. certain artists जो कि हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इवन दो हमारी नहीं है दिलजीत। दोस्ती, हाँ बराबर वालों से हमारी कोई दोस्ती नहीं है लेकिन कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि हमें बड़ी इज्जत देते हैं and we give them love back so shout out to those people. Shout out to those people for sure. So where were we at? Yes, being your own हाँ, fan. being your own Being your own fan. So there's बड़े लोग आपको कहेंगे ये कर लो वो कर लो, but you just need to stick to what you believe in. And if I do believe in what I'm putting out, hopefully it will work. And if it Yeah, all right. Okay, so now let's talk about future plans. I mean, we're sort of winding down, so I just want to know, like, future plans. They're so, I mean, sky's the limit, bro. Like, you know what I mean? Like, now you're back in it. Now you're doing so many various different things. Like, you're locked into how things work, kind of. Like, so am I, because, you know, we're from a different generation of how Yeah. we used to work. But we're kind of locked in on how things work. Now, पिछले साल you came back. This साल you're doing well. Next year, God knows what's going to happen. possibilities are endless. और So what are we planning? What's मैं going चाहता भी हूँ slow progress. I don't want too much progress too soon. on? Right. क्योंकि Longevity इसी में है. longevity भी I feel like the process is the fun part. Yeah. Once you get to that hill, it's all downhill from there. यार वैसे मैं एक बात बताऊँ Unless you look up another hill कि हाँ अच्छी जी बात K2 की। के बाद माउंट एवरेस्ट अब ये चढ़ना है. पता है ये कितनी अच्छी बात की है लोग ना प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो ये सोच रहे थे यार ये करना है बस कितना पहुंचना है अगर मैंने कुछ सीखा था ना अपने प्रीवियस करियर से, एंड इफ देयर वाज एनीथिंग दैट आई वाज गिल्टी ऑफ और लुक बैक कि हाँ जी मैंने फेम छोड़ दी तो मैंने क्या व्हाट आई मिस्ड आउट कि हाँ while I was in the जब मैंने रिफ्लेक्ट किया कि I was like I was more happy when the process was going on. जब मैं यूनिवर्सिटी में LSE में पढ़ रहा होता था और it was just the passion for music and nobody knew me, and those were the fun times. Right. And those fun times stopped as soon as something blew up. And then just expectations. Right. So this time around, consciously, I have to remind myself again and again. I'm trying to- enjoy the process. Yeah, enjoy This the is process. ये marathon That's very है. true, man. A lot of people don't understand. Okay, they think that because you become famous, it becomes more fun. It becomes less fun. That's what people don't तो ये realize. छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं कि हाँ जी कल हमारे 10,000 व्यू थे, कल 20,000 व्यू. Enjoy that. Yeah, enjoy that. Have Look fun. for the million. Go for the million. Absolutely. Go for Now- the million. Yeah. But enjoy the small victories in between. So what are we looking at like in terms of 2026? Like we're at the almost at the start of 2026. For 2027 bhi aayega. Where do we see Billy X in the next 1 year? Billy X, of course, the everything would float if the rapper Billy X keeps producing good material. And on the side, I'm getting into this fashion thing. Like I feel like I can carry a lot of colors and fashion that other people can't, and I really love it. Okay. To look different. Yeah. तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, and starting with PR collaborations with a few brands. There's this brand called Ekru that I've collaborated with. Recently, I've done it with Cotton Fruit. Nice, nice. Wow. So ये चीज़ें भी बीच में हो रही हैं. You'll see more of that. Again, establishing that side of things as well. That's a different business or income stream, you can say. Oh, nice. So मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ. Acting, not really. Not my thing yet. Maybe. We'll see. Yeah, if Zarar push him for it, go for it. Okay, very quickly, there's a question that I've been wanting to ask, but I forgot to ask it in the beginning, so I'm going to ask it now. How did you make Chutney? Like, how did it happen? Exuberance of youth.
No, but कैसे बना? चलो, tell me the story. How did Chutney come about? कैसे बना? The very first, it was born in the bathroom. That's the true story. यार सही है. The chorus was born in the bathroom. Chorus was born in the bathroom. In the bathroom. I don't know if I was smoking a cigarette or I was taking a shit. मगर मैं bathroom में था when I was listening to that piece of music और ये जो उसकी chorus की धुन है and that started playing. And then some of the words started playing. So when I left the bathroom, went to my computer and started writing. So the chorus first was the first thing that came to life about Chutney. Oh. और जब chorus लिख लिया तो फिर and that was my very first attempt at writing anything in Punjabi और उर्दू क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट नया आया था बोहेमिया ने पंजाबी उसके हेड हुए थे तो उससे पहले हम सिर्फ इंग्लिश रैप करते थे लिखते भी थे इंग्लिश में गाने भी इंग्लिश में बनाते थे देयर वाज नो कॉन्सेप्ट सो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज इवन सोल्ड ऑन इट येट कि दिस कुड बी समथिंग तो फिर मैंने कोरस लिख ली जितनी भी मुझे उस वक्त बहुत कम पंजाबी आती थी मगर जितनी आती थी मैंने एक वर्स लिखी एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गो टू यूनिवर्सिटी और क्लास में तो पढ़ने का दिल नहीं करता था मैं बहुत बोर होता था लेक्चर से बहुत लंबे लेक्चर होते 3 घंटे के तो मैं पीछे करके बिल्कुल बैठा हूँ और किसी क्लास फेलो के साथ आई डोंट इवन रिमेंबर हु द पर्सन वाज और उसको मैंने जो है ना शायद पढ़ के बताया होगा कि देखो ये मैंने नई चीज़ लिखी है इंग्लिश से हट के तो ही गिव मी राइट देयर उसका यार ये दिस इज समथिंग राइट मोर ऑफ इट आई वाज लाइक रियली यू थिंक इट्स गुड ठीक है मैं जाके तो इट टुक मी अबाउट अ मंथ उस वक्त मैं कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता कि गाना लिखना है तो लिखना है इफ़ इट केम नेचुरली यानी मैं रात में बैठा हूँ मैं 8 माइल देख रहा हूँ एंड इंस्पिरेशन आएगी यार आज कुछ लिखते हैं तो आई वुड जस्ट लेट इट कम नेचुरली जब ऊपर से आता था तभी मैं लिखता था अदरवाइज आई वुड जस्ट तो 1 महीना लगा चटनी लिखने उसके 3 वर्सेस पूरे करने में मगर उसमें मैं फिर बीच में प्लान भी करता रहा कि यार दिस इज़ अ फ्रेज जो हम अपने दोस्तों में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल कतर पतर फॉर एग्जाम्पल तेरी बहन नू तो आई मेड अ लिस्ट ऑफ दोज फ्रेजेस और वर्ड्स दैट आई एक्चुअली वांटेड टू पुट इन द सॉन्ग एंड देन आई लेट nature do its thing or was okay where were you when you found out the song has become huge so it was a slow just okay when did it hit you the song had become huge like कौन सा वो moment था जहाँ पे क्या आपको oh okay मैं बन गया हूँ स्टार गाना हो चुका है हिट सीन ऑन हो चुका है मेरा अगेन ये बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं तो like tell me the moment जब हमने गाना पहली दफ़ा रिकॉर्ड देयर इज एक्चुअली 2 वर्जन्स ऑफ द रिकॉर्डिंग पहली दफ़ा जब हमने रिकॉर्ड कर दिया सो इट लेफ्ट माई फोन एंड वेंट टू अ गर्ल्स फोन एट यूनी और फिर उसके कोई महीना बाद जो है ना हमें मुझे और दानिश को वी स्टार्टेड गेटिंग न्यूज़ कि यार वो तुम लोगों का गाना तुम लोगों ने वहाँ पे गाया था और मैंने सुना किसी पेट्रोल पंप पे और वो कह रहा था कि हनी सिंह का गाना है तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि समथिंग इज हैपनिंग लाइक नाउ वी नीड टू ओन दिस तो फिर वी स्टार्टेड डूइंग एक तो हमने उसका नया वर्जन रिकॉर्ड करवाया बिकॉज द फर्स्ट वर्जन वाज रियली बहुत गंदा मिक्स मास्टर था उसका तो वी वेंट एंड डिड इट्स द सेकंड टाइम और सेकंड टाइम में फिर हमें मेरे एक दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि दिस इज जस्ट टू आउट देयर इसका थोड़ा सा एक सटल वर्जन भी होना चाहिए तो फिर हमने उसके अंदर वो वर्ड्स चेंज करके उसके 2 वर्जन्स बना लिए फिर फ्रॉम दैट हैव 2001 में पहली रिकॉर्डिंग 2009 में दूसरी रिकॉर्डिंग एंड देन फ्रॉम 9 to 11 वी वर जस्ट डूइंग अंडरग्राउंड गिग्स जस्ट टू प्रमोट दैट सॉन्ग एंड देन 11 इज व्हेन वी डिड द वीडियो एंड when we came to Karachi and then it actually blew up on TV and Facebook and everything. So it was a long, I think 3-4 years process for that song too. Wow, amazing. What a story. All right, now very quickly, Billy X, look into the camera and I need you to give, हमें से कहते हैं words of wisdom. Words of wisdom ये होता है कि any advice, any best advice you've gotten, any words of, wisdom, anything you'd like to say to the people that are watching you right now, like whether it's a young kid, whether it's an old uncle, whoever, like just what do you want to say? long advice or needs to be whatever you want to say. It's up to you. It's completely up to you.
Cool. So मैं हूँ Billy X. अगर मुझे देख रहे हो तो this is advice for you from what I've learned in the long life that I've had, and I've had a full life. बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं ज़िंदगी के अंदर. गाने भी गाए हैं, बाहर भी गए हूँ, पढ़ाई भी बहुत की है, नौकरियाँ भी की हैं, पैसे भी कमाए हैं, सब एक्सपीरियंसेस हुए हैं. बट आई गेस what I took away from some of the musical thing, and there was a time when I came back to Lahore and I sat with Muneeb Nawaz. This is 2020 actually. Muneeb Nawaz had heard Doorbeen and for the first time from me. Shout out to Joke as well. Doorbeen, yes, Joke ने record किया था. तो he just invited me to have a chat. तो I went to him and I was like, हाँ मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान वापस आने की, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं business कर लूँगा, मैं music भी कर लूँगा. And he was like, you're thinking too much. You're trying to do too many things. Don't put all your... नहीं. So he was like, you need to put all your eggs in the same basket. If you need to burn all other ships. ठीक है, have just one ship. Because if that happens, then you will do anything and everything to make that work. Amazing. And right now I'm doing the music thing for the first time and not focusing on anything else. Amazing. And I'll hopefully see it through. So if you're passionate about something, just see if you can leave everything else behind and just give that your 100%. And if it works, it works. If it doesn't, at least you know it wouldn't work. Amazing advice. Billy X, thank you so much for being on the show, brother. Such a pleasure, and I wish you all I wish you all the best, man, as always. And looking forward to our next interview. और पता नहीं उसमें क्या होगा. We'll see, inshallah. मेरी शादी नहीं होगी. I know, हो भी जाए तो क्या है, अच्छी बात है. हमें मटेरियल मिल जाएगा कुछ बात करने का. But no, Billy X, thank you so much, brother, for being on the show. Thank you for having me. Always. Thank you. Love you, bro. And इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि Billy X का आपने अगर एपिसोड आपको पसंद आया, remember to subscribe, remember to share it, and go and check out all his work on Instagram and all the social media. I'll see you guys next time. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.